अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। So now you can't sit 40 or 50 odd years later and start inventing what you would have done. I don't think that Mr. Modi would ever have been in a position to do anything like that in the kind of India that we had back in 1971. लेकिन इन्हें हर उस बात से नफरत है जिससे हमारी आस्था का सम्मान होता हो। साथियों, ये इंडी गठबंधन वाले घोर सांप्रदायिक है, ये घोर जातिवादी है, ये घोर परिवारवादी है। सत्ता के लिए ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। साथियों, यही कांग्रेस है जिसने सत्ता के लिए देश का बंटवारा किया, और बंटवारा भी ऐसा किया कि 70 साल तक हमें करतारपुर साहिब को दूरबीन से दर्शन करने पड़ते थे, और हर कोई इंसान अपमान महसूस करता है। मैं कांग्रेस वालों को कहता हूं कि जब बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक सरेंडर कर चुके थे। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक हमारे कब्जे में थे। हुकुम का पत्ता हमारे हाथ में था। और साथियों, मैं विश्वास से कहता हूं, अगर उस समय मोदी होता, अगर उस समय मोदी होता तो मैं इनसे करतारपुर साहब लेकर के रहता, तब जाकर के उनको जवानों को छोड़ता। I find this kind of counterfactual conversation borderline irresponsible. Number one, I presume he's referring to the fact that we had their soldiers in 1971-72. And at that time, there was a peace agreement negotiated very skillfully by our then Prime Minister Indira Gandhi. Kartarpur was never discussed. It wasn't a controversy at that time. It wasn't an issue at that time. And frankly, we had just fought two wars, 65 and 71. I don't think that anybody was thinking in terms of any territorial or border adjustments, which require a different climate. So now you can't sit 40 or 50 odd years later and start inventing what you would have done. I don't think that Mr. Modi would ever have been in a position to do anything like that in the kind of India that we had back in 1971. Honestly, history and this kind of stuff is all very good for academic discussions in universities, but they are not, to my mind, relevant considerations in an election today. We have to discuss people's welfare. We have to discuss what actually affects the lives of Indian citizens, India's people, and that's what